अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फ़हद मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं आई सुपर कोडर। इस वक़्त मैं एक काम में मसरूफ़ था। मैंने सोचा आप लोगों के सामने करता हूँ। हुआ ये कि रोज़ा था और मैं थका हुआ था। सुबह का वक़्त था 11 साढ़े 11 का। तो मैंने एक सब फ़ोल्डर को डिलीट करा था अपनी वेबसाइट पे और मैंने वीपीएस पे लॉगिन वीपीएस पे लॉगिन किया वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे और मैंने आरएफ की कमांड यूज़ की। आरएम का मतलब होता है रिमूव और आरएफ का मतलब होता है रिकर्सिवली सारी उड़ा दो और सारी उड़ा दी। अभी फाइल्स मेरे पास नहीं है। एक ऐसा वीपीएस था जिस पे फाइल्स रिकवर नहीं की जा सकती क्योंकि आरएफ जो है वो उसका बैकअप नहीं रखता। मैंने कोशिश की मुख्तलिफ जगहों से डिलीटेड फाइल्स रिकवर करने की, अ, तो नहीं हो पाई। अब देखता हूँ क्या करना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा काम करना है। वो ये है कि आप लोग मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आप लोगों को दिखाई दे रही है। आप लोग 11 लोग देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो काइंडली जल्दी से कंफर्म कर दें कि मेरी वीडियो सही आ रही है और मेरी ऑडियो भी आ रही है। आज मैं 2 कैमरा सेटअप पे हूँ, सामने भी एक कैमरा है और यहाँ पे भी एक कैमरा है। तो देखते हैं। ये देखें जी, 2 फ़हद आज आपको दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैंने आपसे इस तरह से बात करनी होगी तो मैं यहाँ पे आपसे बात करूँगा। लेकिन मेरे ख्याल से ऑडियो जो है वो किसी एक जगह से आ रही है, तो उसको मुझे फिगर आउट करना होगा। जब मैं उस कैमरे से आपको देख रहा था सामने वाले से, तो आवाज़ आ रही थी। ये काइंडली मुझे कंफर्म कर दें। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अच्छा ज़ीशान, मुझे ये बताइए कि जब मैं ये कैमरा अच्छा जी। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से मुखातिब होता हूँ। मुझे एक छोटा-सा काम है, उसको ख़त्म करना है। आपको प्रॉब्लम समझ आ गई है कि आज मैंने क्या गलत हरकत की है पिछले हफ़्ते और उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, नहीं पता चला। हुआ ये कि मैंने अपनी वेबसाइट गलती से डिलीट कर दी। आरएफ की एक कमांड होती है लिनक्स में, उसकी मदद से पूरा फ़ोल्डर उड़ा दिया। अब मेरे पास ना इमेजेस हैं, ना कोड है, ना कुछ है। लेकिन सिर्फ़ उसका डेटाबेस बाकी है। लेकिन उसका सिर्फ़ डेटाबेस बाकी है और देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। अच्छा, साउंड म्यूटेड ऑन सेकंड कैमरा। ठीक है जी, मैं इसी कैमरे को इस्तेमाल करूँगा, उस पे नहीं जाएँगे और कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक हो गया जी। मैं जल्दी से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ और फिर उसके बाद अभी तो आ रही है ना आवाज़? और फिर उसके बाद चलें। मुझे किसी की मदद करनी है थोड़ी-सी, मुझे थोड़ा-सा वक़्त दें, उस वक़्त तक लोग जॉइन कर लेंगे और फिर हम इस कोड का आगाज़ करते हैं। अ, ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। आपने परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे भी मैं अभी मतलब पहाड़ों के दरमियान हूँ, इंटरनेट मज़े-मज़े का नहीं चलता। अब कल मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाऊँगा। यहाँ के प्रॉब्लम्स मैंने मैक्सिमम सॉल्व कर लिए हैं, कुछ अभी ईद के बाद होंगे, क्योंकि रमज़ान में अपैरेंटली लोग काम नहीं करते। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कर लेंगे, वो भी हो जाएगा। हाँ, ठीक है, सेकंड कैमरा नहीं यूज़ करते, वो मेरा मेन कैमरा है, ये आईफ़ोन का कैमरा है। तो मैंने सोचा इसको भी ट्राई कर लेते हैं। इसी से आपको ऑडियो भी जा रही है। इसके ऊपर मैंने डायरेक्शनल माइक लगाया हुआ है, जिससे आप मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है। अच्छा जी, तो ओके, इनके मैसेज का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। बाकी आप लोग देखें कि मैं करने क्या लगा हूँ। अच्छा, अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर देखते हैं कि हमने क्या करना है। देखते हैं जी कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ ना मसला क्या है, जो मसला हम सॉल्व कर रहे हैं। विजुअली दिखाता हूँ। वैसे तो आपको समझ आ गई है कि मैंने अपनी वेबसाइट उड़ा दी है बेवकूफ़ों की तरह। लेकिन दिखाता हूँ, देखने से ज़्यादा अच्छी चीज़ समझ में आती है। स्क्रीन। अच्छा, ये बहुत से लोग ये हरकतें करते हैं, सिर्फ मैं नहीं हूँ। लेकिन एक्सपीरियंस बंदा जब ऐसी हरकत करे तो वो फिर ज़रा ज़्यादा फनी होती है। सो मेरे मेरी वेबसाइट है आपके सामने और इसका नाम है fahadmurtaza.com। आई सुपर कोडर वाली सेफ है, महफूज है। अभी अभी मेरे हाथों से महफूज है वो। और ये देखें जी, वेबसाइट नहीं चल रही। इस पे एक मैंने नया टूल जो वर्डप्रेस प्लगइन्स हुक्स एक्सप्लोरर बनाया है,
वो सामने मौजूद है। बाय द वे इसके भी 4-5 वर्जन्स बना चुका हूँ। ये इसका पहला वर्जन है, नहीं ये इसका दूसरा वर्जन है। उसके बाद 3 नए वर्जन्स बना चुका हूँ। एक रिएक्ट से बनाया था जो कि आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी ये डेटा टेबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एडमिन साइट की हुक्स देखनी है तो एडमिन अंडरस्कोर कर लेंगे तो एडमिन अंडरस्कोर जिसमें भी आता है वो आपको दिखाई देने लग जाएंगी। अच्छा, अब दूसरा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अदी बिल्कुल इस्लामाबाद तो मुलाकात होगी। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग कोई किसी वीकेंड पे कोई इफ्तार वगैरह इकट्ठे करते हैं और ऑब्वियसली सिंस योर फादर हम मुलाकात भी नहीं हुई हमारी तो ज़रूर इंशाल्लाह। और अच्छा जी, अभी कुछ ऐसा करते हैं कि मैं आपको वो वाला दिखाता हूँ जो मैंने नेटलिफाई के ऊपर डिप्लॉय किया था और वो मैंने बनाया था किसके ऊपर भला, वो रिएक्ट में बनाया था। अच्छा, रिएक्ट का प्रॉब्लम ये है कि वो सर्च इंजन फ्रेंडली नहीं है इतना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ नेटलिफाई पे जो मैंने बनाया। अच्छा बाय द वे, इसका मेरी वेबसाइट से कम ताल्लुक है, वेबसाइट की रिकवरी से, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि लाइक वेबसाइट जब डिलीट हुई ना तो मैंने कहा यार कुछ नई चीज़ लॉन्च करते हैं, पुरानी वेबसाइट को गोली मारो। लेकिन उसको भी रिकवर करूंगा ऑफ कोर्स, लेकिन आपको ये जो टूल मैंने बनाया है ये भी दिखा देता हूँ। आप जिस फॉर्मेट में भी यूज करना चाहें, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे। ये निस्बतन मॉडर्न फॉर्मेट है इसका। इसमें तमाम की तमाम बुक्स एक जगह पे लिस्टेड हैं और इसमें नंबरिंग हुई हुई है, फाइल किस फाइल के अंदर मौजूद है, किस लाइन नंबर पे मौजूद है। आप बड़ी आसानी से देखें। WP ट्रैक बैक को अगर आप सर्च करते हैं ना, ये मेरे पास एक कोड है क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, जो ओवर द वीकेंड या पिछले कुछ वीक्स में मैं काम कर रहा था। तो अगर आप इस फाइल के ऊपर जाते हैं, ये सर्च करते हैं और लाइन नंबर 111 पे जाते हैं, देखें लाइन नंबर 111 तो ये आपको एग्जैक्टली exactly उस फाइल पे ले जाएगा। अभी ये देखें, इसी फाइल के ऊपर वो कोड आपको मिल जाएगा, डू एक्शन प्री ट्रैक बैक पोस्ट। और इसका PHP डॉक भी आपको दिखा देगा जो यहाँ पे ऊपर मौजूद है, ब्लॉग नेम। तो बेसिकली मैंने यहाँ से ये चीज़ एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाई है, लेकिन इसकी मजीद डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिलेगी। अभी ये बिल्कुल स्टार्ट है ना, पहला ये तीसरा वर्जन है और ये जो मैंने यहाँ पे पुश किया है ये चौथा वर्जन है, जिसमें सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च की कैपेबिलिटी नहीं थी और जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक पॉपअप में खुलती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने उसको लिंक कर दिया एक एक्सटर्नल पेज के साथ और वो एक नए पेज में खुलता है। तो ये ज़्यादा सर्च इंजन फ्रेंडली है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि PHP डॉक्स नहीं है। काशिफ ने, शहजाद ने और कुछ दोस्तों ने जो कि वर्डप्रेस के बंदे हैं, दुनिया के टॉप के बंदे हैं, उन्होंने मुझे जो रिकमेंडेशंस दी हैं उनके मुताबिक मैं Daniel, I have no idea how to turn on the language translation, so I apologize for that. But you can watch this again in the future with the translation on. So the captions will be automatically generated on YouTube. You're on LinkedIn, I guess, yeah? So what you could do is go to my YouTube. I'll give you the link to my YouTube, and you can turn on the captions, the live captions, and then you can watch it in English. Got it? So let me do that right away. Apologize for that because most of my audience is in Hindi and Urdu, so that's what I do. But what I can do is I can show you my YouTube channel right away, and youtube.com/ at the rate of iSupercoder. And then, and by the way, I can see that you're from LinkedIn. So this is the first time this is the second person who is commenting from LinkedIn. That's amazing. So this is my channel, I as in iPhone, Supercoder, and then you can go to the live tab right here. Oh, it's right there. So you just click on that and you can open that video and turn on the captions, and that should just do it. One other thing that you can do is go to Facebook, the same link, facebook.com/iSupercoder, and then you can also watch from there. So let me just put that link right away in the chat. Click there and get the video. Okay, so दोबारा से उर्दू में बात करते हैं। ये साहब इनको उर्दू नहीं आती तो मैंने इसलिए फिर अंग्रेजी में बात की थी। अच्छा खैर, वापस चलते हैं अपने इस पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है, ये लिंक्स। तो गूगल पे जब कुछ सर्च करेगा उसको बड़ी आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। अभी मैंने अपने इस टूल का इंट्रोडक्शन करा दिया। ऑब्वियसली ये बिल्कुल अपनी बेबी है, चैट GPT की तरह।
तो आहिस्ता 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 इसमें अपग्रेड्स होंगे और तकरीबन 6 वीकेंड्स के ओवर द 4 to 6 वीकेंड्स मैंने बनाया है इसको। टोटल टाइम जो मैंने लगाया है वैसे इजीली इजीली 40 एक घंटे तो लगा दिए होंगे इस पे अभी तक, सोचने पे करने पे। तो इसको इस्तेमाल करें और आपको मैंने तरीका बता दिया कि पे किस तरह से जाना है। आपने डबल शिफ्ट करते हैं PHP स्टॉर्म में या फिर किसी भी टूल के अंदर आप ये फाइल का नाम लिखेंगे, हाइफन लिखेंगे, उस लाइन का नंबर लिखेंगे, तो वहां पे डायरेक्टली वो आपको ले जाएगा और फिर आप इसको स्टडी करके मजीद पढ़ सकते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना सीख लें, आप पूरी जिंदगी आसान हो जाएगी। यूट्यूब पे वीडियोस आपको पता नहीं उस टॉपिक पे मिले ना मिले, क्या पता। और बड़ी आसानी से आप देखें, कोड को देखकर आप बता सकते हैं कि किस तरह से काम होता है। बाय द वे मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ, आपको मेरी सिर्फ एक स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। और सिर्फ 10 लोग रह गए हैं, दैट मीन्स कि अब मैं प्योरली टेक्निकल बातें कर सकता हूँ। सो लेट मी जस्ट शेयर दैट। अच्छा जी, अब देखें जी, जब भी ट्रैक बैक के अंदर ये कोड मौजूद था। अब लाइन नंबर वर्डप्रेस का एक्शन मौजूद है। तो इस तरह से आप इस डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूँ प्री ट्रैक बैक पोस्ट। अभी देखें यहाँ पे wp-trackback.php पर लाइन नंबर 111 पे मौजूद है। और इसी तरह से अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और फिर इस पे चले जाते हैं, जस्ट इस पोस्ट पे चले जाते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से ये मिल जाएगा। और जब इसकी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होगी, जब इसकी एग्जांपल्स मौजूद होंगी, तो आप एक ही सफ़े पर आकर मुकम्मल तौर पे सीख सकेंगे। बाय द वे मैंने ये इंस्पिरेशन एडम ब्राउन की वेबसाइट से ली थी। एडम ब्राउन में एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने वर्डप्रेस पे भी काम किया हुआ है और WP हुक्स का उनका डेटाबेस है। मैं ये चाह रहा था कि इसको थोड़ा मॉडर्न इंटरफेस में दिखाया जाए आपको। बाय द वे ये मेरी जो स्क्रीन है ये कुछ फॉल्ट हुई है, आपको लाइव नहीं दिखाई दे रहा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको आपको देखने में, लेकिन इट्स ओके, थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं। अच्छा, लेट मी जस्ट क्लोज दैट, शो इट ऑन स्क्रीन। अच्छा जी, ये एडम ब्राउन की वेबसाइट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस के तमाम जितने भी वर्जन्स आए हैं उन सब की हुक्स की डिटेल मौजूद है। और मैं वर्जन 6 पे चला जाता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उन्होंने देखें वर्ड कुछ एड्स भी लगाए हुए हैं और यहाँ पे सर्च मौजूद है, लेकिन सर्चेबल नहीं है ये। आपको खुद ही मतलब यूं देखें सारे थ्रू जाके, और बहुत लंबी सी वेबसाइट है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू सर्च थ्रू इट। तो मैंने जो इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट लाई है वो ये है कि आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्री के नाम से जितने भी मौजूद हैं जिनके अंदर प्री लिखा हुआ आता है, वो सब की सब यहाँ पे आप, ये प्री अंडरस्कोर जो है उस सब की सब यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉगिन से रिलेटेड कोई मौजूद है यहाँ पे, तो वो आप सब की सब यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर आप नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाकर जितनी भी लॉगिन से रिलेटेड हैं वो यहाँ पे ये फिल्टर होके सामने आपके आ जाएंगे। और नीचे आपको दिखाएगा लॉगिन से रिलेटेड कितनी है, टोटल 66 है, लाइक 66 है। तो टोटल 3058 है और इधर 66 है। तो आप इस टूल का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मैं बाद में एक शॉर्ट वीडियो भी बना लूंगा जिसको आप लोग स्पेसिफिकली देख सकेंगे। हे So looks like you found a way to watch it. Good, thank you. But you're still watching from LinkedIn, I guess. So you can just go to, and this is just for you, Daniel. You can just go to this link uh, and watch it, and it's in the comments below on LinkedIn, I guess on YouTube as well. But I just showed you the link. But if you want to really watch it in high quality, then it's just on iSupercoder on Twitch. This is just brilliant. The quality is really good on that one. So that you can do. And now let's just go back to my website and let's just fix that, which is down. So we just need to fix that. So Urdu mein वापसी, and what we should do is just go to the website. I'm hosting it on Hostess, and I'll just go to my client area. This is like a VPS service, which is like really cheap.
I pay around $6 for 4 months because it's like a really tiny website and it's fast enough for my needs. I am not that guy who spends like $100 on a website every month. I don't do that. If I need it, then I'll do that. See, I'm only using 14% of the disk space. Why would I need like something special? I can manage my VPS. Obviously, I can also delete things by mistake, but that what's the fun in like hosting it somewhere where it's safe? So okay. So I have joined you on YouTube now. Now, could you please turn on the caption? Let me see. So you know what? I think what happens is it does it automatically. So I have no idea how to do that, like on the fly. But I can promise you that this video will have automatically generated captions in English for you to watch it later on. So I'll just make sure that you leave a comment here and I'll make sure that you get the captions for like how to fix a deleted website from the database. If you deleted the files and everything, how to recover it from just the database in WordPress. So I apologize if it's not working right now, but what we can do is just give you in the future. So I apologize for that. Or maybe, just to make you feel welcome here, we'll just do the rest of it in English. What do you think? Let's do it because only 6 people are watching, and I'm pretty sure that all of them are good enough in English. And yeah, let's do that. Let's do all of that. Just to feel you, just to make you feel welcome here. How does that sound? Let's do that. Okay. So okay. So let's just go to the server information, the one that we are using right now. This one is terminated. So go back to the products that are active right now. So the one server which is active right now is right here, this one. And as you can see that I'm paying $6 quarterly. So that's pretty cheap if you ask me. It doesn't get cheaper than that. So this is the website hosted there. So what I'll do is I'll just open that in terminal, and I have this right here. And what I'll do is open it, make it bigger so you guys can easily watch it. And let me know if it looks good enough. And what I'll do is I'll clear the console and then I'll log into the server using the secure shell, which is SSH. And what I'll do is SSH root. And by the way, it doesn't show up for you. I know that. Yeah, now it shows up at the rate of that server. And I'll just move it to the same line. And that's it. And it will ask for password, which I don't remember. I keep it in my LastPass. So I'll just copy from there. And there we go. Oh, come on. Let's just copy the password. By the way, my stream is really slow. So what I'll do is I'll keep my video off. Okay. So since my audio won't work without it, so what I'll do is I'll just put this right here and we'll see if there's a way of just showing the screen so the system doesn't lag. Yeah, I think so. The whole idea about this being in English was, in Urdu was that I can teach the non-technical guys, but seems like only 9 people are left which really want to learn and they already are good enough in English. So there's no point in streaming it in Urdu. If someone wants to learn, they can learn. You're absolutely right about it. So yeah, as you can see my screen, this was my IP. And I think there is some problem with the stream because as soon as I change that window, it just starts showing up again. So what I'll do is I'll stop sharing. I'll close the sharing and I'll share the whole screen once more. There's something going on here, which I'm not sure about. So I'll share the whole screen. Let me know when you start seeing the terminal
So entire screen, there you go. Logging in with the root at that IP. By the way, this is the IP that you can use to attack my. You cannot make any brute force attempts in logging in, which is perfectly okay. You can try that. I'm the one who deletes his own server, so I don't need any enemies right now. I'm my own worst enemy right now. But what's the fun in not deleting things and rebuilding them? So I'm happy that I did it so that I can fix the problems that have been pending for like a long, long time. I might have to redo it because it's been a while that I tried that. So yeah, I logged in. See, there were like this many failed login attempts. So a lot of you have been trying. A lot of you have been trying, but failed login attempts. So don't even try, you know. So let's just clear that. And what I'll do is I'll connect to the this server's MySQL server so I can get my database. So I have SQL Pro right here. So I already have like username and password saved here. So as you can see, this is the IP, this is the root, and this is the password for root, and then I have the username and password for MySQL. So first I connect through a tunnel to MySQL. No, sorry, the server. So this is my server. And I'm connecting to this via the root login. So this is me. This is my app. And this I'm connecting with this one, which is a server using this tunnel. Like think of tunnel like this. So I'm connecting with this. And now this one has this database, which I'm connecting using these, like this. Now I'm local, like now I've reached here. Now I'm local to this server. So I'm connecting this with a MySQL host, which is like a local server 127.0.0.1. And then I'm just using the root and password for logging into the MySQL. So there's like two things happening here. And that's why I'm using SSH because I have the access to the server. You might use TCP IP, you might use the socket. If you're local, then you might use the socket. So are you connecting to that? So let's just connect to that. I hope this works. And I hope that I haven't forgotten the passwords. Yeah, it is connecting. It is connecting. So the database that I was using is called WordPress. This is the database for isupercoder.com, and this one is for WordPress. Okay, yeah, you're welcome. So we have an unrelated question, but it's a really good one. If you're just starting, I guess Tailwind is much better than Bootstrap at the moment. But if you already know Bootstrap, then it's something to build upon. So Tailwind is the next big thing. Everyone is using that. So it's like the buzzword right now. So you should learn that. Even if someone doesn't use it, this is good enough for boasting about it. That I know Tailwind, the Bootstrap guys like me. So okay, so this is the database that we have here, and this is fmdb underscore something. So I'll just change it after the screen because now you know my database. And the reason why I want to use the database rebuild is because I have all my posts in here. So these are the posts. As you can see, I have like about how many? Oh, wow, I have like more than 400. Really? I don't know. So let's just figure out how many we have. Select count. Ooh, we just had a power cut, so I might go offline. I might go offline because we just had a power cut. As you can see, the light went off. This is just on the UPS. This might work for 5 minutes. So we'll have the power cut. I might come online again later on if the power is back. Otherwise, I'm gonna say goodbye now. So we'll have a second step. This is just count all from fmdb
underscore post. So let's just try running this selection. There are 178 posts. So as you can see, there's a lot of work that I've done already. I need to recover that. So what I'll do is the first thing, the first order of the business is like selecting all of them. And you can use anything. I'm just using SQL Server, this thing called SQL Pro, but you can use anything to connect with that server. So it's up to you. And then exporting that database like that, and on the desktop, and I'm selecting all the tables and clicking on export. This is going to take some time to export it. I have no idea how long, but let's just hope that it will take a lot less. Export as SQL dump. And yeah, there's no compression. Let's do some compression. Gzip is very fast. Let's just do that. Yeah, now it started exporting, and I think it will take some time, but this is just like the digital equivalent of watching the paint dry. So we'll just wait until it gets done. In the meanwhile, I'll just open my question and answer session. So if you have any questions, you can ask, and I'll be able to answer them. Go ahead, go ahead. While there is still light, let's just do that. हेलो anybody home? किसी को रोजा तो नहीं लगा हुआ? So let's just hope that it finishes before we lose power. So yeah, because as soon as it's done, the database will disconnect from because I won't have any internet. Right now we are on the UPS, which is surprisingly working much better than it usually does. Usually it just turns off in 5 minutes. But yeah, from tomorrow on, we don't have to worry about this problem because I'll have the power. We just have to use generator like 12 hours a day here, and not in the night, but sometimes they just turn off the power at random times. So yeah, it is what it is. So my plan is to just export the database. You don't have any questions? Come on, ask some questions while you have me here. So looks like the database is exported, if I'm not mistaken. So I'll just do an Fn F11 to see this one right here. Okay. Time for a meme before I go offline. So this, you remember this guy from The Sixth Sense? The good doctor guy, he's the one. He used to say, there's a famous thing from that movie. I see dead people, but that's not what I see. I see dead pixels. Let me just make it bigger. I see dead pixels. Isn't it funny? Okay, so let's just open that database and import that one locally. And for that, what I'll do is I'll just open a new website, and we'll create a new website locally, a WordPress website, which I'll call Fahad Murtaza. Maybe that should be it. If it's not already there, there is one. So let's call it latest blunder. Okay, so let's just continue and see what happens. We just use the preferred environment. So we're just creating a local setup, and we'll just import that database into it. And I'm just using admin and admin as username and password because it's local, and I'm not worried about the security of that because nobody can access it locally except for me on this computer, or maybe my local network. So not really concerned about safety. Okay. So seems like nobody's interested in learning how to rebuild a website using a database, which is perfectly okay. It's like middle of night in Pakistan, and nobody really watches me in the middle of the night. So I'm about to go offline. Before that turns off, I'll just say goodbye to you guys, and we'll see you next time. We'll restart from here where we left off.
So just just so you can see that it's like really dark in here. Let me turn on my phone screen so that you can see me. It's kind of funny. It's kind of funny. I'm still working, but I, I don't have any power. My computer is working because it's a laptop, but everything else is turned off. Yeah, yeah. We are just leaving now. So and the second version of this screen. Is it fun? Okay, see ya. Goodbye.